Namaste and welcome everybody. We are going to continue with the same chapter that is refraction, and you know the difference between reflection and refraction. Reflection occurs when light falls on the mirror which one side is painted. When it is one side is when it doesn't pass through it, whereas refraction occurs when the light passes through the medium. And how it passes, when it is passing from denser to rarer medium, how it behaves. Please see the previous video and try to recall. And now let's do lenses. Dear students, have you ever noticed that how a watch repairer does his work? How does he manage to locate and fix such tiny particles of the watch? What do you think? Does he use to view such small parts? What does he use? So dear student, he uses lens to magnify the part of the watch. So let's do this part, that is lenses. We are going to do lenses. This is important part of this chapter. Besides the glass slab and the prism, it is lenses that are used very often for studying and using the effects of refraction. Hope you can recall the definition of refraction. And now what is lens? Lens is a portion of a transparent refracting medium bounded by two surfaces. When both or one of these surfaces are spherical, the lens is known as spherical lenses. Now see here, a lens is a part of a transparent refractive medium. Refractive means from where when the light passes, it changes its direction. It deviates from the normal. Okay. So when both or one of these surfaces are spherical, the lens is known as spherical lenses. Now spherical lenses are of two types, convex and concave. Convex is converging, because in converging, this is convex. In this, when the light falls on it, it converges at one place. Whereas this is diverging. When light passes through this medium, it diverges, मतलब बिखर जाता है, फैल जाता है, spread out हो जाता है. So this is convex lens and this is concave lens. Now see the different types of lens, how different types of lenses are mentioned here. Double convex lens, it is also called biconvex. This is also called biconvex lens, and double concave, this is also called biconcave. Plano-convex, one side is plane whereas the other side is bulging. And see, always remember, convex is in the lenses in which the middle part is bulging, मतलब बीच में से ये मोटा होता है, जबकि concave में बीच में पतला होता है. Here it is plano-concave, where one side is plane and the other side is concave, and diverging when the both side is in concave. This is the part of concave mirror. Okay. Now a definition of some lens related terms. Just like in concave mirror or convex mirror, there were some elements, there were some terms which you have understood, that is principal axis, this is mirror, this is pole, focus, center of curvature. All these are different terms which you have understood by now. It was in the 7th and we have done it in the previous videos also. Now let's do it. Let us first understand the meaning of the first term. Meaning of the few terms relevant to the lenses. Center of curvature. Just like in
the mirror, that is concave mirror, if we are talking about concave mirror and this part is painted one, this is the part of a big sphere and this is the center of this sphere, and this is the this the midpoint of pole and center of curvature is focus, and the line joining center of curvature, focus and pole, center of curvature, focus and pole is called principal axis. हम लोगों ने ये भी सीखा था कि when the line is parallel to the principal axis, what happens? It will reflect from the focus. Whereas when a line passes through the focus, it will be parallel to the principal axis. Just try to recall that video that I shared, or you see the book, the diagrams, ray diagrams given in standard 7. Okay, so similarly, center of curvature is the center point of, because if we are talking about the this spherical mirrors, spherical lenses, like if we are talking about this converging lens, what will, this is the part of, there are two spheres, there are two spheres of which this is the part, okay, and this is the center of this sphere is center of curvature. Now see here, there are two center of curvature, so there will be two focus, right? और हम लोग कहाँ से देखेंगे किस चीज़ को हम लोग फोकस 1 मानेंगे और फोकस 2 मानेंगे? अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो हम लोग इधर वाले पार्ट को सेकंड वाला फोकस मानेंगे, ओके? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ईच of two surfaces of a spherical lenses can be regarded as a part of a sphere. The center of these two spheres are known as center of curvature, okay? It is quite clear, I guess it is quite clear. Okay, this is the center of curvature. Okay, now let's move to the next part. Radii of curvature. This is simple thing, so nothing to worry about. Radii, you know that this is the plural of radius. So radii of curvature, because we are talking about the two radius, right? We are talking about the two radius because there are two spheres, sphere 1, sphere 2. So there are two radius. The radii of two spheres of which lens surfaces are part of are known as radii of curvature of the two surfaces of the lens. See this. This is the sphere, and from the center this is radius 2 and it is radius 1. क्योंकि हम लोग इधर से लाइट, हम लोग मानेंगे कि light is coming from this direction, the beam of rays falling from this direction. So this is radius 1 and this is radius 2, and this is radius center of curvature 1 and this is center of curvature 2, and the line joining the center of curvature and the pole, this is optical center. Here it is in the mid of this is optical center. So principal axis, just like we have done in simple mirror, that is convex mirror and concave mirror. Principal axis, the line joining the centers of curvature of the two surfaces is known as its principal axis. Quite evident. This is principal axis, line joining to the center of curvature of two spheres and this optical center. Now optical center, now principal axis, here it's quite clear. Now optical center is, the optical center of a lens is a special point on its principal axis. A ray of light passing through the optical center of a lens goes straight through it without undergoing any bending or deviation. Now let's see it, how it goes. When the light is passing through optical center, which is here, when it is passing through like this, so it will go straight, whether it is
convex lens or it is concave lens. If it is falling like it is passing through the optical center, it will pass through just like straight, just like that. Okay, so goes straight through it without undergoing any bending or deviation from its path. होना क्या चाहिए कि तुम लोग सोचोगे कि इन कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, एक जगह होना चाहिए. बट यहाँ पर जब ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट क्रॉस कर रही है, लाइट जा रही है, तो वो स्ट्रेट चली जाएगी, वो कन्वर्ज और डाइवर्ज नहीं करेगी. ओके. एंड प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ. It turns out that if a beam of rays all parallel to the principal axis of a lens falls on the lens, all such rays either all converge to a point on its principal axis or appear to diverge from a point. Now converge क्या हुआ, जब एक जगह सारे इकट्ठे हो रहे हैं. ओके. और डाइवर्ज क्या हो रहा है कि जब बिखर रहे हैं, एक फैल रहा है, जो लाइट जा रहा है वो बिखर रहा है, फैल रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है. तो what it is written here, it turns out that if a beam of ray all parallel to the principal axis, सारा जो अगर principal axis यहाँ पर अगर हम लोग बना लें और ये principal axis है और सारा लाइट जो है ये parallel है, तो क्या falls on the lens, all such rays either all converge to a point. अगर ये ऐसे जा रहा है तो सारा converge करेगा एक पॉइंट पर, हाँ, फोकस पर, या फिर कहीं पर भी एक जगह एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर एक जगह पर लगेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस पर ही डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है, वहीं से डाइवर्ज हो रहा है. ओके. नाउ वी कॉल दिस पॉइंट एज द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस. लेट्स अंडरस्टैंड इट. Now see here, see the picture carefully. This is a beautiful picture and many of the concept will be clear here only. देखो ध्यान से, please see it very carefully. Now see here, all the parallels are parallel light. The beam of ray is parallel to this principal axis. Now it is converging at one place, or here it is what it is said. What it is said? It is said all converge, means converge to a point on its principal axis. Of course, this is principal axis, and here only all the conversion is happening, or appear to diverge. Now see here, in this case, since the light is scattered, diverging, so now it is appearing. Now when we will trace back the line, it will appear to be diverging at one point on its principal axis itself. Okay, whether it will be converging or appears to be diverging on the principal axis, and we call this point as the second principal focus of the lens. Now see here, this is second principal focus. See here, in this case this is principal focus. See the position in convex lens and concave lens. Here it is second principal focus, and here it is, this side it is second principal focus, and this is the length, the distance between midpoint of the lens and the focus is focal length. You know focal length, just like as it was in mirror. Now let's see, to illustrate the focusing action of a convex lens by using it to burn a hole in a piece of black paper. Actually it happens, you too can experiment it. Take a convex lens and a piece of black paper, keep this paper in sunlight, hold a convex lens, preferably one provided with a handle, ये मिलता भी है, in the hand, and adjust its position so that a well focused sharp pointed image of the sun is formed at some point on the black paper itself. थोड़ी देर रखने के बाद क्या होगा, we will soon observe that focus point on this black paper is burning out and a hole gets created around the point. क्या पता चलता है इससे?
कि जो इन्फिनिटी से जो बीम ऑफ रे आ रहा है वो एक जगह पर जा कर के कन्वर्ज हो रहा है, और वो जगह कौन सा है? फोकस है. द बर्निंग अकर्स बिकॉज द लेंस कंसंट्रेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी on a very small area. We use a black paper because you know that black objects are the best observer of radiation. Now recall radiation. Radiation is transfer of heat when no medium is required. Transfer of heat when there is no need of the medium. Now the principal focus of the lens as you just read is really the second focus of the lens, and the corresponding focal length is the second focal length. Just try to understand, observe the ray diagrams that is given on page number 178, and you will understand which one is second focus and which one is first focus. We also define the first focus and the first focal length of a lens. This is done as follows. Let's, और यहाँ पर फिर से डिफाइन भी किया हो गया the first principal focus, that is, or focal length. The first principal focus of a lens is a point on its principal axis that if a ray of light passes through it for a convex lens or is directed towards for the concave lens, it becomes parallel to the principal axis after refraction by the lens, right? We call the distance of the first principal focus from the optical center. Optical center पता है, principal focus पता चल गया. अब क्या चीज़ है? ये जो distance हुआ principal focus और optical center as the first focal length of the lens. Usually the first and the second focal length of a lens are equal to each other. Of course, they can however be different from each other in certain situation. Let's see it. Now see here. When the light is is coming from this direction, this is the first focal, this is the first principal focus, and this is the, ये देखो optical, this is the, what is this? Optical center. तो optical center से जो ये distance हुआ, this is first focal length, where in the same case that is the same way in the concave lens as well. Now important precaution, it is important to protect our eyes from direct or strongly reflected solar radiation. We should never look at the sun directly during any experiment. Also there should not be any strong reflection towards the eyes. क्यों भाई, अभी तुम लोग आई पढ़ चुके हो, तो you must be aware कि उससे क्या होगा कि अगर फोकस पर है तो जैसे पेपर जल जा रहा है तो आँख को भी बहुत हार्म करेगा. इस रेडिएशन से डायरेक्ट बहुत सारा लाइट अगर आएगा तो बहुत हार्म करने वाला है. जैसे तुम लोग कभी कभी अंधेरे से जब अचानक से लाइट ऑन करते हो रात में, तो हाउ डू यू फील? आँख कैसे हो जाती? छोटी हो जाती है कि बड़ी होती है? छोटी हो जाती है, बिकॉज दैट मच ऑफ लाइट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. योर आइज इज़ गेटिंग अकस्टम्ड ऑफ द लाइट दैट इज़ फॉलिंग ऑन योर रेटिना. ओके, यू हैव स्टडीड लेंस, दैट इज़ आई, तो वहाँ पर तुम लोगों ने ज़रूर पढ़ लिया होगा. नाउ 3 स्फेरिकल रेज फॉर लेंसेज. नाउ हाउ टू ड्रॉ द ray diagram? Just like in the mirror, the spherical mirrors, we took 3 lines. Which line? A line parallel to the principal axis, and then line passing through the focus, and on this basis, and the line passing through the center of curvature. यही 3 लाइन को यूज़ करके हमने we have drawn many of the images, putting it at different positions. Now here we are going to do with the lenses. There we did in standard 7, we did with the mirrors. Now we are going to do with the lenses. We can use the ideas and definition. You read on previous pages to draw ray diagrams for lenses. अभी हम लोग को पता चल गया, क्या क्या पता चला भाई हमें, कि प्रिंसिपल एक्सिस से अगर जा रहा है तो क्या होगा, एक जगह पर कन्वर्स होगा, वो कन्वर्सन कहाँ पर होगा, वो पॉइंट कौन सा होगा, फोकस होगा. तो यहाँ पर हम लोग ये जान चुके हैं प्रीवियस पेजेस में. दीज रे डायग्राम्स हेल्प अस टू नो द नेचर, साइज एंड पोजिशन ऑफ द
इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा, कैसा साइज़ होगा, सेम साइज़ का होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, पोजीशन कहाँ पर होगा, तो ये सारा चीज़ हमें पता चलेगा. When an object is kept at different distances from the lens, we generally use 2 of the 3 special incident ray described below to draw these ray diagrams. Dear students, it's important that you understand these 3 points in order to draw correct ray diagrams. An incident ray parallel to the principal axis passes through or appears to come from the second principal focus of the lens. To understand this, come to this point. Come to page number 178. 178. Now read it again. An incident ray parallel to the principal axis passes through or appears to come from the second principal focus of the lens. पास करेगा या appear करेगा? पास किस केस पे करेगा? जब it is convex lens. and appear कब करेगा? जब it is concave lens. चलो ये वाला फिर से तुम लोग देख लो, ये वाला just see this one क्या चीज़ है? पहला पॉइंट हम लोग को तीन सिचुएशन है. देर आर 3 सिचुएशंस, 3 रेज, 3 इंसिडेंट रेज, जिसके बेसिस पर हम लोग क्या बनाएंगे? रे डायग्राम बनाएंगे. तो पहला क्या हो गया कि अगर ये पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल जा रहा है तो ये कहाँ से पास करेगा? सेकंड फोकस. दिस इज सेकंड फोकस. यहाँ से या तो ये करेगा या फिर इट विल अपीयर टू बी. इन दिस केस इट इज़ जो डॉटेड लाइन है ना, तो ये शो कर रहा है कि हाँ यहाँ पर मिल रहा होगा. सो दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल. ये इसका क्या हो जाएगा? सेकंड प्रिंसिपल. एंड द सेकंड पॉइंट इज, पहला तो हम लोग ये देखेंगे पैरेलल जा रहा है, दूसरा देखेंगे एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस गोज अनडेविएटेड फ्रॉम द लेंस. ये है ऑप्टिकल सेंटर, और अगर इसकी तरफ से अगर रे जा रहा है तो ये कोई डेविएशन, देखो यहाँ पर डेविएशन हो रहा है, इस केस में डेविएशन हो रहा है, यहाँ पर भी डेविएशन हो रहा है कि या तो कन्वर्स हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है. लेकिन जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो कोई डाइवर्जन नहीं होगा. इट विल नीदर कन्वर्स और डाइवर्स, ये स्ट्रेट निकल जाएगी. ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हुआ, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, और ये सेकंड पॉइंट व्हाइल यू आर मेकिंग रे डायग्राम. एंड द थर्ड पॉइंट, an incident ray passing through the first principal focus of the lens or directed towards it becomes parallel to the principal axis after refraction from the lens. इसी का उल्टा हो जाएगा. ओके, अब देखो फर्स्ट केस में पैरेलल हुआ, सेकंड केस में ये ऑप्टिकल से अगर जाएगा तो स्ट्रेट निकल जाएगा. फर्स्ट केस ये हुआ, सेकंड केस ये हुआ, और थर्ड केस में क्या होगा? इसी का उल्टा हो जाएगा कि अगर लाइन यहाँ पर एक फोकस यहाँ पर भी होगा, ऑफ कोर्स एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा. ठीक है, थोड़ा अच्छा से बनाया. चलो ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दोनों का हाफ होता है, ये पता है तुम लोगों को. अब ये इस केस में अगर इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, क्या होगा? इसी का उल्टा हो जाएगा, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, है ना. अगर ये यहाँ से फोकस से जा रहा है तो इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सो लेट्स draw. I hope you will be able to. This is the illustration that it is the parallel to the principal axis and it is converging at focus, while when it is passing to the optical center it is going without any deviation, whereas in this case when it is passing through the focus it becomes parallel to the principal axis.
नाउ इन द सेम केस इफ इट इज़ पासिंग थ्रू, तो ये इसमें तो कन्वर्स हो रहा है तो यहीं पर बन जा रहा है, लेकिन इसमें डाइवर्स हो रहा है, तो डाइवर्स जहाँ पर उसको एक्सटेंड कर रहे हैं लाइन, तो यहाँ पर बन रहा है. सिमिलरली ऑप्टिकल, ये वाला ऑप्टिकल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस स्ट्रेट निकल जाएगा. जिस तरह से इसमें हुआ इसी का उल्टा यहाँ पर हो जाएगा कि अगर यहाँ से जा रहा है तो इसका ये पैरेलल हो जाएगा. वेरी सिंपल, एकदम सिंपल है. ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है और इसमें तो स्ट्रेट निकल गया है. ठीक है, लेट अस see how we can use any two of these three special incident rays to draw ray diagrams for different objects position for a convex lens. अब अलग अलग पोजिशन पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसा कैसा इमेज बनेगा. नाउ लेट्स सी इट. कॉन्वेक्स लेंस. अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स इमेजेस ऑफ डिफरेंट साइजेस. कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस मीन्स जो कि मिड में मोटा हो. साइज, नेचर एंड एट डिफरेंट पोजिशन फॉर ऑब्जेक्ट्स केप्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर. कहाँ से हम लोग मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से. ऑप्टिकल सेंटर से वी कंसिडर द फॉलोइंग 6 केसेस दैट cover all the possible types of images formed by this lens. The ray diagrams have been drawn using up to 2 of the 3 spherical rays mentioned above. 2 यूज़ करने से भी बन जाएगा, कोई सा भी 2 यूज़ करो, 2 rays यूज़ करो and you can be able to make the ray diagrams when the object is at different position like it is on focus or it is beyond the center of curvature or between the focus and the center of curvature or between the optical center or focus. There are different situation, different position of the object to form the image. Now the characteristic of the image formed have been written along with the corresponding ray diagram. Now this is very important part and I'm telling you this is the easiest part as well. Now when the object is at infinity, हम लोगों ने यहाँ पर 2 रे लिया. कौन कौन सा रे लिया कि ये इन्फिनिटी से आ रहा है तो क्या होगा, एक जगह पर डाइवर्स हो जाएगा. अब जब इन्फिनिटी से आ रहा है, काफ़ी दूर से आ रहा है, तो एक जगह पर डाइवर्स हो रहा है तो कैसा इमेज बन रहा है? रियल. रियल इसका मतलब क्या? इट इज़ ऑन द स्क्रीन, डिमिनिश, छोटा सा, almost point like image. It is formed at the focus of the lens अगर दूर से आ रहा है तो. ठीक है. Now second part, object somewhat beyond the 2f point of the, ये 2f क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर रखा जा रहा है तो बस वही इमेज इज़ हियर. फर्स्ट वाले केस में इमेज दिख ही नहीं रहा है, वो बहुत इन्फिनिटी पर है, कहीं दूर में रखा हुआ है, तो उसका इमेज बन रहा है फोकस पर, जैसे सन का रेज आ रहा है उसका इमेज बन रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर इमेज कहाँ पर रखा हुआ है? बियॉन्ड द 2f ऑफ द लेंस. मतलब ये जो 2f है, ये 2f इज़ हियर एंड द ऑब्जेक्ट इज़ हियर. तो हम लोग को 2 आपने 2 इंसिडेंट रे करवानी है. तो one is parallel to the principal axis and other is going through the optical center without deviation. देखो कहाँ पर इमेज बन रहा है? इमेज बन रहा है between f and 2f. This is second focus. 2f of the lens on its other side, the side opposite to the side on which the object has been put. मतलब इस लेंस के opposite side में बन रहा है, ये नहीं कि इस साइड में बन रहा है, इस साइड में नहीं बन रहा है, लेंस के इस साइड में बन रहा है. क्या है इमेज का कैरेक्टरिस्टिक? दैट इज़ रियल, मीन्स इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. डिमिनिश्ड बहुत छोटा, इन्वर्टेड, सी हियर इट इज़ इन्वर्टेड, उल्टा बना हुआ है इमेज, एंड फॉर्म्ड बिटवीन द f एंड 2f. इस f और 2f के बीच में बना हुआ है, ये इमेज बन रहा है. अब तीसरा कंडीशन लिया गया है, ऑब्जेक्ट एट 2f. अब क्या किया? पहले तो इस वाले केस में हम लोग, इसके पहले वाले केस में हम लोग 2f के बियॉन्ड में था. नाउ वी आर पुटिंग इट ऑन द 2f, एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया. अब ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर बना तो इमेज कहाँ पर बना? ठीक उसी साइज का बना, ऑन द सेम प्लेस एट द अदर साइड ऑफ द लेंस. द इमेज फॉर्म्ड हियर इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज. It is formed at the 2f
of the lens on the other side of the lens. Dear student, this is the this ray diagram is very easy. What you need to is to practice a little bit and try to understand how the image is moving. See how the image is moving. Object between 2f, and now in the first case it was beyond 2f, सेकेंड केस में 2f पर आया, अब कहाँ पर आया जा रहा है, बिटवीन 2f एंड f. तो अब क्या हो रहा है, देखो इमेज उस केस में, फर्स्ट वाले केस में कहाँ पर आया था, when the image was beyond 2f, तो क्या आ रहा था, 2f के इधर आ रहा था, यहाँ पर बन रहा था. उसके बाद 2f पर लाया गया तो बना एकदम 2f पर बन गया, ये वाले जगह पर बना. अब हम लोग इमेज कहाँ पर ला रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग द इमेज बिटवीन 2f एंड f. 2f एंड f, तो इमेज अब यहाँ पर 2f और f के बीच में लाया गया. तो देखो बस वही दो लाइन यूज़ किया है, बस 2 इंसिडेंट रे को डाला गया, एक इधर से. लेकिन ये ध्यान रखना है कि बहुत सारा इमेज बनता है, मतलब ये है तो एक पॉइंट बन रहा है. एक्चुअली बीम ऑफ रे is going through and number of light is crossing through this lens, but for the convenience we are using just 2 rays. That is, here it is going parallel to the principal axis and it is passing through the focus, and the other ray we are using is going through the optical center and which doesn't deviate, it simply goes through straight. And see the image where it has formed. Now again it is at the other side of the lens, so it is real and it is inverted. Now see the size, यहाँ पर छोटा है लेकिन देखो इसका बड़ा साइज बन गया है, it is magnified, so it is formed beyond 2f, 2f के इस साइड बना है. Now the fifth position, fifth object kept at the first principal focus of the, अब यहाँ पर रख दिया गया. अब यहाँ पर रखने के बाद क्या आ रहा है, इसको भी फोकस से गुजार दिया, इसको ऑप्टिकल सेंटर से, और दूसरा रे फोकस से गुजर गया. ठीक है, पैरेलल से गया तो फोकस से गुजरेगा, बस दो तो याद ही रखना है. अब ये जो फोकस से गया तो ये देखो पैरेलल पर जा रहा है. पैरेलल लाइन तो कभी मीट नहीं करता है, बट हम लोग मानते हैं कि इट मीट्स एट इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी पर अगर मिल रहा है तो इमेज का हम लोग कहाँ पर, जहाँ पर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर इमेज फॉर्म हो रहा है. ऑल द केसेस यू हैव सीन वेयर ऑल दीज 2 लाइन्स आर बीइंग इंटरसेक्टेड, देयर ओनली द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड. हियर जब पैरेलल लाइन इन्फिनिटी में जाकर मिलेगा तो इन्फिनिटी में जाके फिर इमेज बनाएगा, राइट. और इमेज कैसा बनेगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के इस साइड बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, तो ये इन्वर्टेड होगा. अब क्योंकि जा करके बहुत दूर में बन रहा है तो वो रियल होगा, मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा. इट इज़ रिगार्डेड एज फॉर्म वेरी फार ऑफ और एट इन्फिनिटी, बहुत दूर में जा कर के बनेगा. नाउ 6th पोजिशन रखा गया है बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस. अब क्या हुआ, देखो यहाँ पर एक, अभी तक हमारे सारे केसेस में क्या हो रहा था, इमेज हम लोगों ने यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, और इमेज यहाँ से ऐसे 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 करके बड़ा होता जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था. इमेज तो एक ही, साइज़ तो हमने एक ही सब जगह के लिए लिया, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ा रहे थे इमेज का साइज़ बड़ा होते जा रहा था. लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन देखो अलग सा आया है. व्हाट इज़ दैट कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ से आपने जैसा सारे इमेज को जैसा आपने बनाया, द वे यू हैव फॉर्म्ड द इमेज इन द सेम पैटर्न. नाउ यू डू दिस. एक लाइन पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस से एंड इट हैज़ पास्ड थ्रू द फोकस एंड देन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पैरेलल नहीं है, सी ये फैलता जा रहा है, ये तो कभी मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा, ये दूर होता चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा, राइट. तो दूर होता जाएगा, तो ये तो अब इसको हम लोग जो वापस इसको आगे की तरफ मिलाना चाह रहे हैं, तो देखो इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से, तो इट अपियर्स टू बी मीटिंग एट सम पॉइंट एट द सेम साइड ऑफ द लेंस, राइट. एंड सी हियर द इमेज फॉर्म्ड हियर इज वर्चुअल. नाउ सी, अभी तक हम लोग का सब नीचे ऐसे इन्वर्टेड बन रहा था, और
क्या था, सब लोग रियल इंटरसेक्शन हो रहा था, रियल इंटरसेक्शन होगा तो रियल इमेज बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइन्स अपीयर्स टू बी मीटिंग हियर, लाइन्स इज अपीयरिंग, मतलब हो नहीं रहा है लेकिन अपीयर हो रहा है कि हाँ ऐसा मिल रहा है। तो ये कौन सा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। और सी इमेज इस डायरेक्शन में है तो ये इमेज भी इसी डायरेक्शन, मतलब इरेक्ट, सेम पोजीशन एक जैसा है, मतलब नेचर एक जैसा इरेक्ट है। लेकिन क्या है, साइज़ देखो, कंपेयर द साइज़, यहाँ पर साइज़ छोटा है, यहाँ पर साइज़ बड़ा है, यानी मैग्नीफाइड इमेज। इट अपियर्स टू बी फॉर्म बियॉन्ड द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस, है ना, फोकस से दूर में जाकर के बन रहा है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सी हियर, ये फोकस है और फोकस से दूर बन रहा है। नाउ सी हियर, सी द टेबल, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस हैव बीन समराइज्ड बिलो इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो अभी तक आप व्हेन यू विल गो थ्रू इट ऑल द इमेज फॉर्म, you will find when the object is at infinity, image, nature of image is real and inverted, size is very small, and position is at the focus. Now when it is kept beyond the 2f, real and inverted, smaller than the object, between, see the how it the image has been formed. Now you can see, just see here, सारे को एक साथ देखो, see all together, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, कहीं पर भी पोजीशन है सब में रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। सिर्फ इन वन केस, जस्ट इन वन केस, दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, just go through this table. This is the table, this is the summary of the ray diagrams that we just did. Now keep a book vertically on the bench at least 1.5 meter away from your eyes. Hold a convex lens at arm length and look at the image of the book seen through the lens. Record what happens when you move the lens and your eyes closer to the book. Observe any change. तो होता है ना, जब देखते हो कि जो ऑब्जर्व करते हैं वो बार बार लेंस को आगे पीछे करके ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका मतलब कुछ तो उसमें चेंज होता होगा, कुछ तो चेंज हो रहा है। नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस बाय अ कॉन्केव लेंस। वही होगा जब उसका पोजीशन अलग अलग, इमेज का पोजीशन अलग अलग हो रहा है। अगर हम लोग लेंस को आगे पीछे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका फोकल और सेकेंड फोकल पॉइंट सारा चेंज हो रहा है, राइट? तो उसका इमेज, नेचर ऑफ इमेज भी चेंज होगा। तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? यू विल सी दैट व्हेन द लेंस आर केप्ट वेरी नियर टू द बुक, द टेक्स्ट गेट मैग्नीफाइड through the convex lens. It gets considerably diminished through the concave lens. The image of letters and diagrams through the convex lens can appear inverted or erect, or depending on the distance of the lens from them. बस वही है जो हम लोगों ने अभी जो रे डायग्राम बनाया बाय कॉन्वेक्स लेंस, पता चला कि अलग अलग पोजीशन पर अलग तरह का इमेज बना रहा है। तो बाय मूविंग द लेंस अप एंड डाउन फ्रॉम द, वी आर एक्चुअली चेंजिंग द फोकस एंड सेकेंड फोकस ऑफ द लेंस. Now we can now understand why we often use a convex lens of small focal length, मतलब छोटा focal length, मतलब बीच में से ज़्यादा मोटा रहे, है ना, with a frame with a handle as a simple magnifying glass or as a reading lens. This is because a convex lens produces a virtual, erect and magnified image of an object when the focus is kept close to it. अभी हम लोगों ने देखा था कि 6 situation हमने we draw the ray diagram in 6 different situation, and only one situation when the object was between optical center and the focal point, the image was virtual and erect and it was larger than the object. और ये कहाँ पर बन रहा था? Beyond the focus point on the same side of the lens, same side of lens पे बन रहा है. Now see here, concave lens. We have discussed now. We have discussed convex lens. Now we are discussing concave lens. Concave lens मतलब जिसका जो middle part होगा वो thin होगा.
Unlike convex lens, the nature and general position of the image formed by a concave lens does not depend upon the distance of the object from the lens. उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. A concave lens always forms. Concave lens क्या form करेगा? Virtual, erect and diminished image. Also, image always appears to be located between the optical center and focus point of the lens on the same side as the object. We illustrate, अब चलो इसको हम लोग देख लेते हैं. We illustrate this feature of the concave lens by drawing ray diagrams for 3 different distances of the object from the lens. Let's do it. Now, in the similar way, there are 3 situations. First situation में क्या डाला गया है? First situation में अब करना वही है. क्या करना है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज़ द लेंस, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है तो क्या होगा? ये यहाँ से डाइवर्ज होगा और फिर कहाँ पर ये मीट करेगा? फोकस पर मीट करेगा. जस्ट सी हियर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड द लाइन इज गोइंग थ्रू पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये क्या, ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये डाइवर्ज कर जाएगा, लेकिन ये क्या करे? अपीयर टू मीट एट वन पॉइंट, दैट इज एट फोकस, राइट. उसी तरह से फिर ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से तो विदाउट डेविएशन रे क्रॉस करेगी, रे पास ऑन करेगी. तो वहाँ जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, देयर द इमेज विल बी फॉर्म. नाउ सी द इमेज किस तरफ बन रहा है? द सेम साइड ऑफ द लेंस. और इसका इमेज का क्या है? देखो, जब ऑलवेज रिमेंबर कि अगर ये डॉटेड लाइन दिख रहा है यानी एपरेंट इंटरसेक्शन हो रहा है, देन the image will be virtual. And see the nature of the image, it is erect. लेकिन ये बहुत छोटा बन रहा है, this is diminished, right. अब इस केस में तो ये बना. अब दूसरे केस में देखते हैं. दूसरे केस में हमने कहाँ रखा? यहाँ पर पहले 2f के बियॉन्ड रखा था. अब 2f के और f के बीच में ले आया ऑब्जेक्ट को. अगेन वी आर डूइंग द सेम. अगेन द इमेज इज़ वेरी स्मॉल. अगेन द सेम थिंग. अब देखो यहाँ पर भी ले आए तो भी इमेज का साइज हमेशा एक ही जैसा बन रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. ऑल्सो इट ऑलवेज अपीयर टू बी फॉर्म बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. मतलब इमेज कहीं पर भी रखो, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. सी, ऑब्जर्व द फिगर. Now, recall the activity performed in class 7 to study the details of image formation by concave mirror. Yes, try to recall it. A lighted candle and a screen was used for the activity. We can now perform the same activity. Now we have to use convex lens to use this experiment, this activity. Take a convex lens, a small candle and thick sheet of paper. Use molding clay stand. मतलब ये सारा अरेंजमेंट है. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी एंड मेक वन वीडियो टू एंड शेयर इट. ओके, नाउ एडजस्ट द पोजीशन. दिस इज ऑल द वे, दिस इज द वे यू आर आस्क्ड टू डू द एक्टिविटी. तो यू ऑल आर इंस्ट्रक्टेड टू प्लीज डू इट and observe your observation, note down your observation and share with all. And do you know what is to be known? When a light ray propagate means आगे बढ़ता है, from a medium of high refractive index to a medium of lower refractive index, it bends away from the normal. Naturally bends away from the natural at a center critical angle. The refractive, so here the reflected medium of higher refractive index, this phenomenon is known as the phenomena of total internal reflection. Do you want to understand what is this? It is not that big deal. Let's do one thing. Suppose this, I am drawing this line. Okay, let me just wait. Suppose this is a demarcation, this is rarer medium,
this is rare and this is denser medium. What happens when the light is falling on this medium and this is rarer medium, so we have to draw one normal. तो रेयर में क्या होता है, रेयर में क्या होता है कि वो नॉर्मल से अवे जाती है. दिस इज इंसिडेंट एंगल एंड इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से जाएगी. the light will pass like this. Now see here again, if we change this angle, or we are this beam of light is falling on this angle and this is the normal, तो क्या होगा, ये नॉर्मल से, और ये ऐसे तो जनरली ऐसे जाती सीधी निकल जाती, लेकिन ये नॉर्मल से दूर जाएगी. तो दूर जाएगी तो क्या होगा, ये वाला एंगल ये थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा, ये एंगल और छोटा हो जाएगा, मतलब ये वाला जो एंगल है बड़ा हो जाएगा. दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मोर. एंड नाउ अब ऐसा भी केस आएगा कि अगर हम लोग इस एंगल को और थोड़ा सा स्लैंट कर दे और इसको झुका दे, दिस इज़ डेंसर मीडियम एंड दिस इज़ रेयर मीडियम, एंड वी नो दैट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में अगर जाती है तो इंसिडेंट रे क्या होते हैं, नॉर्मल से अवे जाती है, दूर जाती है. तो अब अगर ये ऐसे करके जा रही है तो कायदे से ऐसे निकल जाना चाहिए था इसको, हाँ ऐसे निकल जाना था. नाउ ड्रॉ और नॉर्मल हियर. अब क्या होगा है कि ये इसको तो और दूर जाना है, ये इसका ओरिजिनल पाथ होता. अगर ये डेंस और रेयर मीडियम नहीं होता, ये सिंपल मीडियम अगर सेम मीडियम में अगर ट्रैवल कर रही हो तो इट वुड हैव गॉन लाइक दिस. बट हियर इट इज़ पासिंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम. तो अब क्या होगा, ये और लेट जाएगा. मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि लगेगा कि इसी के साथ का ये एंगल बन गया. अब ये इसी के साथ ये ये जो बना रिफ्रैक्टेड रे हुआ वो ऑन द सेम सरफेस आ जाए, और ये तब क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. राइट. तो यहाँ पर क्या लगेगा कि यहाँ तक आ गया है. तो दिस इज़ व्हाट, अब के इसी को ये वाला जो इंसिडेंट एंगल हुआ, दिस इज़ व्हाट critical angle. This is given here. This is what, critical angle. Okay, this is critical angle. Now एक केस और हो सकता है कि अगर मैं इस केस में एक और केस यहाँ पर बनाऊँ मैं, चलो यहाँ पर अगर एक केस और बनाऊँ, फोर्थ केस, कि यहाँ तक तो ये आ गया 90 डिग्री. अगर यहाँ पर से मैं डाल दूँ इस तरह से और मैं इसको स्लैंट कर दूँ, अब 90 डिग्री से नीचे चला जाएगा, 90 डिग्री से, यानी कि सेम मीडियम में ये वापस चला जाएगा. ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इट विल कम बैक टू द सेम मीडियम. तो सेम मीडियम में क्या हो जाएगा, ये ऐसे, तब तो सेम मीडियम में अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा, नॉट रिफ्रैक्शन. इट विल बिकम रिफ्लेक्शन. और इसी एंगल को हम लोग कहते हैं, इसको नॉर्मल बना लो, ड्रॉ नॉर्मल हियर, ड्रॉ नॉर्मल हियर, एंड this angle will be what, critical angle. जब ये और ये दोनों एंगल जब बराबर हो जाए then this is critical angle. और यहाँ पर फिर अपना laws of reflection of light will apply. Okay, तो ये इसी के कारण जो होता है मिराज वगैरह देखने को मिलता है. We will understand in the more clear way in the higher classes. So this is about what, total internal refraction. You read and reread and try to rewind, मतलब वापस जा करके इसको एक बार वीडियो को देखोगे तो maybe you will be able to understand. Right now, application of lenses. Lenses find a number of uses and application in our day-to-day life. This include the magnifying glasses and the microscope, the telescope and the photographic camera, among others. The human eye also has built-in lens that plays a very important role in its function. Dear students, you must have studied by now the human eye and how it function, how it lens work, how it is. The human eye is the excellent example of
lens and its functioning. So I hope this you have understood. And do you know lenses have been put to use in designing great refractors? These are large telescopes that use specially designed lenses. Some of the great refractors built over years have been the following: a 61 centimeter aperture refracting telescope in Flagstaff, Arizona. ये सारा different telescope है, और a 69 centimeter aperture. When we are talking about aperture, जो कैमरा के शौकीन लोग हैं वो लोग बहुत जानते होंगे कि अपर्चर क्या है और उसका क्या यूटिलिटी है इन द कैमरा. तो अपर्चर क्या है? इट इज़ द ओपनिंग ऑफ अ लेंस डायफ्राम थ्रू विच लाइट पासेस, राइट? फ्रॉम दैट ओनली द लाइट पासेस. एंड जितना ज़्यादा अपर्चर होगा, वाइल जब उसको फोटोग्राफी वगैरह में इसका यूज़ होता है, कैमरा में जो DSLR कैमरा वगैरह रहता है उसमें अपर्चर का दिया रहता है कि हाउ द अपर्चर्स आर बीइंग यूज्ड. तो दीज आर द डिफरेंट refractors, and this is aperture refracting telescope. Okay, these are the different and what is refractor? जैसे रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाएगा या जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ रिफ्रैक्टर. सो दीज आर द रिफ्रैक्टर जो कि बनाया गया है. हाउएवर, बिकॉज ऑफ अ वेरी many practical difficulties, astronomers now no longer prefer to use large telescope made from lenses. Nowadays it is the reflecting telescope made from mirrors that are used by astronomers for exploring the far depth of sea. These are very much larger in size than great refractors. Remember, refractors are the device which does refraction. And this is, as I say, it is important to go through these keywords as it will clear your concept, and these are easy to remember, and it is very useful while answering the questions. Apart from that, you must know is one of the important part of the chapter, which at the end of the chapter, which gives you insight about the things that you have gone through. And this is important, and if you will understand, if you will learn all these points, you are sure to get almost 90% or 100% marks in this chapter if the question is asked from. Okay, dear students, this chapter stands completed. Okay, that's all. We will do the question answer in the next class. That's all. Bye, take care, stay safe. Bye bye.